trigonometry proofs, students feel it difficult to deal with this exercise. If you follow few basic steps, easily you can solve this exercise. So this exercise is one of the important exercise for board exams. So let's start out with this. So the first question, prove that, find the value, this can be your MCQ, 9 sec square A minus 9 10 square A. So here tips to be followed. Write down all the identities aside, so that will be like easy for you to deal with. So whenever you will be starting, so just you keep your exercise, all the identities aside, so that easily you can have your learning. So 3 identities are there. Sin square theta plus cos square theta is 1. Sec square theta minus 10 square theta 1. Cosec square theta minus cot square theta 1. So these 3 identities are very useful identities. Prior to having your revision, you need to start out with all these. So keep aside these identities. It will be very easy and helpful for having the solution. हाँ, चलो अभी देखो इस क्वेश्चन में हमारा 9 sec square A, 9 10 square A. We can take 9 common. अगर अपन ने 9 कॉमन ले लिया, sec square A minus 10 square A. So as per second identity, value of sec square minus 10 square 1. तो अपन इसको रिप्लेस कर लें. So answer is 1. This can be MCQ. फिर next question 2, 1 plus 10 theta plus sec theta 1 plus cot theta minus cosec theta. We need to find the value. So whenever we have questions in this form, change out all the terms to the simple forms. 10 theta sin theta upon cos theta. तो 10 को हमने रिप्लेस करके sin by cos कर लिया. sec is 1 by cos. वैसे ही cot का वैल्यू हो गया. cot 10 का रेसिप्रोकल होता है. So it's cos theta upon sin theta. cosec is 1 upon sin theta. सारे वैल्यूज हमने प्लेस कर लिया है. Now simple LCM. Cos theta LCM. Then cos multiplied by 1 is cos theta. Then इन दोनों के नीचे डिनोमिनेटर cos ही है, तो जैसे हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर है बस उनको ही लिख दो. तो ये हो गया sin थीटा प्लस 1. वैसे ही यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर sin थीटा, तो पहले हमने sin थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 sin थीटा कर लिया. बाकी cos थीटा माइनस 1. अब इनमें से ये जो फर्स्ट टर्म है, दिस इज cos थीटा प्लस sin थीटा. अब यहाँ पे एक हमको प्लस में मिल रहा है, एक हमको माइनस में मिल रहा है. तो आइडेंटिटीज हमारे पास प्लस में है और माइनस में है. तो ये हमारा हो गया a प्लस बी, a माइनस बी आइडेंटिटी. तो अब इनको कर लो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो हो गया cos थीटा प्लस sin थीटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. और नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो फिर से आ गया मल्टीप्लिकेशन में. अब ये होल स्क्वायर का आइडेंटिटी हो रहा है. यहाँ पे 2 आइडेंटिटीज हमारे कॉन्स्टेंटली चलते हैं. एक हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर, एक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो अब यहाँ पे हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर देन b स्क्वायर 2ab देन 1 स्क्वायर इज 1. अब नीचे का जो डिनोमिनेटर है एज इट इज वी नीड टू कॉपी. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एज पर आइडेंटिटी 1 होता है. सो इसको रिप्लेस करके 1 लिखा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा. प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया. अब ये भी 2 लाइक टर्म्स हैं तो ये दोनों कैंसिल हो गए.
So value of term is 2. अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वन, sec a plus 10a 1 minus sin a. सो फिर से अगर इसको रिप्लेस करें, sec is रेसिप्रोकल ऑफ cos, सो ये हो गया 1 by cos 10 sin a by cos a. अब ये जो है टर्म नेक्स्ट वैसे का वैसे ही रख दिया हमने. नाउ हियर cos a इज एलसीएम, तो ये हमारा a में है cos a एलसीएम 1 प्लस sin a 1 माइनस sin a. अब ये a प्लस बी a माइनस बी हो रहा है, तो इस टर्म को रिप्लेस करके हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. क्योंकि ये 1 है, सो वी कैन कीप इट एज इट इज अपॉन cos a. अभी जो हमारा पहला आइडेंटिटी था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1. अगर हम cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करें तो साइन उधर शिफ्ट हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा. सो वी कैन रिप्लेस cos स्क्वायर थीटा विथ 1 माइनस और 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा विथ cos स्क्वायर थीटा. तो यहाँ पे 1 माइनस साइन को रिप्लेस करके cos स्क्वायर थीटा ऑलरेडी ओके, ये हमारा a में है तो cos स्क्वायर a. नाउ द टर्म्स विल गेट कैंसल, cos a और एक cos a कैंसिल हो गया, तो आंसर हो गया cos a. जब भी ऐसे हमको sec a tan a कुछ भी दिया है, बस उनको हमको उनके रिलेटेड फॉर्मूलेज में लेके आना है. sec a 1 by cos 10 sin by cos, ये सारे जो रिलेशंस हैं अगर अच्छे से याद रहेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा. सो इनको ज़्यादा ध्यान से करना है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 1 प्लस 10a 1 प्लस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a. वी कैन अप्लाई आइडेंटिटीज डायरेक्टली. 1 प्लस 10 स्क्वायर a माने हमारा आइडेंटिटी होता है sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a 1. इफ यू रिकॉल बैक आइडेंटिटी sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज 1. सो sec स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा. तो हम 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख सकते हैं sec स्क्वायर a. वैसे ही 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा के आगे cosec स्क्वायर a. नाउ व्हाट इज sec स्क्वायर a? इट्स 1 अपॉन cos स्क्वायर a. और sec जो होता है cosec, इट्स 1 अपॉन sin स्क्वायर a. So those who want to learn trigonometry properly, they need to practice out constantly this chapter at least for a week. When you go on practicing same questions again and again, all these formulas will get by heart. So when these all formulas will be with you, then only you can have the solutions in your tips. So now both the terms are in division, they will get reciprocal. Sin will move to numerator and cos will move to denominator. So this will be sin square a upon cos square a. Sin upon cos is 10. So final answer is 10 square a. So this is next question. So this we completed question number 3. This all can be asked in MCQs. Now we are starting out with the second part of the section, that is prove that sums, question number 4. Here the first question is cosec square a or cosec square theta minus cot square theta. Cosec theta plus cos square theta whole square. Cosec square theta minus cot theta whole square we need to prove equal to 1 upon cos. So here we will be starting out with RHS. RHS is given 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. So whenever the sums will be like same terms and then they are in fraction, we need to rationalize it. So ये टिप को याद रखना है कि ऐसे क्वेश्चंस में हमको रैशनलाइजेशन से शुरू करना है. तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे,
जो नीचे का डिनोमिनेटर है उसका ऑपोजिट साइन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा है, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ऊपर नीचे हमको सेम टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। हम लोग रैशनलाइजेशन कर रहे हैं। इसका ऑपोजिट साइन ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करो। अब इसके बाद है दोनों सेम साइंस हैं यहाँ पे, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी, सो इट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नाउ राइट डाउन द होल स्क्वायर आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस 2ab as 1 is there, so directly 2ab लिख लिया, then b square whole divided by 1 minus cos square theta. Now 1 minus 2 cos theta cos square theta, 1 and here 1 plus cos square theta is there, 2 cos theta. Okay, next okay, रैशनलाइज क्यों किए? देखो जब भी ऐसे वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, अगर हम रैशनलाइजेशन से सॉल्व करते हैं तो हमको सोल्यूशन इजीली मिलता है। मतलब ऐसे वाले क्वेश्चंस को हमेशा रैशनलाइजेशन ही किया जाता है जिससे कि तुम सोल्यूशन को इजीली पहुंच सकते हो। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस था तो मैंने 1 माइनस कॉस 2 बार लिया, तो ये हमारा हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। एक तो तुम ऐसे टर्म्स कर सकते हो और ये 1 माइनस कॉस हो गया। अगर ये स्टेप ना करके तुम डायरेक्टली इसका यहीं से भी सोल्यूशन ले सकते हो, जैसे तुमको मतलब सोल्यूशन चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में डिफरेंट मेथड्स होते हैं, सो वी कैन गेट द सोल्यूशंस डायरेक्टली। तो अब ये हमारा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर है और यहाँ पे हमारा हो गया था 1 माइनस कॉस स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर मैंने क्या होता है, साइन स्क्वायर। सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर। अगर ऐसे स्टेप में करते हैं तो ये क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट सेकेंड स्टेप पे ही सोल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा दोनों ही स्क्वायर है, सो वी कैन कंबाइन देम, इसलिए इसको 1 अपॉन साइन कर लो और वैसे ही कॉस अपॉन साइन, दोनों को हमने कंबाइन कर लिया, दोनों में स्क्वायर थे, होल डिवाइडेड बाय होल स्क्वायर। सो 1 बाय साइन क्या होता है, कोसेक, कॉस बाय साइन कॉट। सो यही हमको प्रूव करना था जो कि हमारा LHS था। सो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। एक और बार समझा रही हूँ, ध्यान से देखो। पहले क्वेश्चन हमारा था 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, तो मैंने उसका रैशनलाइजेशन किया। जो डिनोमिनेटर है उसका अपोजिट साइन मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। इसके बाद ये हमारा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया। वैसे ही a प्लस बी, a माइनस बी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर हुआ। 1 माइनस कॉस स्क्वायर मैंने साइन स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर है इसलिए हमने दोनों को एक साथ कंबाइन कर लिया, 1 अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन। फिर उसके बाद 1 बाय साइन जो है वो कोसेक होता है, कॉस बाय साइन कॉट होता है, होल स्क्वायर में चेंज हो गया। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन चालू कर लो, जल्दी बोलो। नहीं समझ में आया तो बोलना, फिर से समझा दूंगी। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, इट्स गिवन cos A upon 1 plus sin A plus 1 plus sin A upon cos A। देखो ये सिंपल हमारा एडिशन है। एडिशन जैसे हम एलजेब्रा में करते हैं, एलसीएम लिया हमने और सिंपल ऐड कर लिया। तो ये दोनों हमारे डिनोमिनेटर हैं, तो ये हमारा एलसीएम हो गया cos A 1 प्लस sin A। अब ये चीज़ यहाँ पे साइन है तो इसलिए हमारा कॉस से ऊपर मल्टीप्लाई होगा। या तो वैसे याद रखो या फिर डायगोनली इसको तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो। सो कॉस मल्टीप्लाई बाय कॉस इज कॉस स्क्वायर ए। वैसे ही अगर ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। सिंपल हमने दोनों का एलसीएम किया, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, इसको इस तरफ मल्टीप्लाई किया। अब ये a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो पहला हमारा हो गया कॉस स्क्वायर ए। अब ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ए स्क्वायर 2ab b स्क्वायर।
आइडेंटिटी अप्लाई किया. नाउ कॉस ए 1 प्लस साइन ए. अब हमको पता है कि कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है 1 होता है, तो इन दोनों को रिप्लेस करके 1 कर लो. 1 प्लस 2 साइन ए होल डिवाइडेड बाई कॉस ए 1 प्लस साइन ए. सिंपल, जैसे हम एल्जेब्रा कर रहे हैं, दिमाग से निकाल दो कि यू आर डीलिंग विथ ट्रिग्नोमेट्री. सिंपल जैसे हमारे सम्स होते हैं बस वैसे ही करते जाना है. 1 प्लस 1 हो गया 2 साइन ए. नाउ कॉस ए 1 प्लस साइन ए. अब दोनों में 2 है, सो 2 विल गेट कॉमन. हमने उसको बाहर ले लिया. 1 प्लस साइन ए कॉस ए 1 प्लस साइन ए. तो ये दोनों हमारा कैंसिल हो गया. अब यहाँ पे बच रहा है 2 अपॉन कॉस ए. 1 बाई कॉस सेक होता है, सेक का रेसिप्रोकल कॉस हो रहा है, तो इसलिए ये 1 बाई कॉस हो रहा है, मतलब सेक. सो 2 सेक ए. यहाँ पे रीज़न लिख लो, बिकॉज 1 बाई cos A is sec A. So this only we need to prove, which is our RHS. Therefore, LHS is equal to RHS. Now let's move with the next question. So अभी जो third question है, third question काफ़ी lengthy question है. Students get very much confused with third question. तो third question को काफ़ी ध्यान से समझना. Easy भी है और important भी है. CBSE के लिए तो काफ़ी important question है. 10 theta 1 plus cot theta plus cot theta upon 1 minus 10 theta. We need to prove 1 plus sec theta dot cosec theta. So how to start with? यहाँ पे याद रखो, we need to convert all the cot terms in 10 terms. So here cot is reciprocal of 10. So we are going to replace cot with 1 upon 10 theta. Now same as cot is there, so it's 1 upon 10 theta. This I replaced, तो ये हमारा denominator में आ गया. Now next to be copied as it is. So what we are getting now? 10 theta. एक और बार समझा रही हूँ. This 10 theta as it is. 1 plus cot theta I replaced by 1 upon 10 theta. And this cot theta was also like 1 upon 10 theta. The remaining part copied as it is. Now 10 theta, this will take LCM. So it's 10 theta plus 1. 10 into multiply by 1 is 10 theta plus 1. Denominator again 10 theta is there. 1 upon 10 theta, 1 minus 10 theta. Now this 10 theta will get reciprocal. So they are in division. So 10 multiplied by 10 is 10 square theta upon 10 theta minus 1. So here we can see, like here in the denominator 10 theta, 1 minus 10 theta is there. If we take minus common, so this term will get reversed and will have same common denominators. So LCM will be easy. So we are taking minus common. So as we are taking minus common, this plus sign will change to minus. And term will also change as 10 theta minus 1. So here to make them equal, I have taken minus common. So this minus will become plus, plus will become minus. So as a result, this plus changed to minus term. Numerator we are having 1. Now let's have LCM. LCM is 10 theta minus 1. Now these two are common. So this term will get multiply. तो ये हमारा 10 square के साथ multiply होके it will change as 10 cube theta. So this 10 is getting multiplied. 10 cube theta minus 1. Here we got the identity of a cube minus b cube. So formula will be a minus b, a square plus ab plus b square. Apply the identity of a cube minus b cube. A minus b, a square plus ab plus b square. Whole divided by 10 theta minus 1. Now the term 10 theta minus 1 will get cancelled. So we left out with 10 square theta, 10 theta and 1. Now
have the separate division. One more tip which you can remember, whenever a single term will be there, we will have separate division. So this will be very useful tip for solving trigonometrical proofs. Now separate them as 10 square theta upon 10 theta, 10 theta upon 10 theta, and 1 upon 10 theta. So here 10 square theta and 10 theta got cancelled, 10 theta got cancelled, and the last we are having 1 upon 10. So here first part 10 theta as 1 10 square got cancelled. Second part we are having 1 upon 10 is cot theta. Now 10 theta can be replaced as sine upon cos. Cot is reciprocal of 10, so it will get replaced as cos upon sine. Now getting LCM, here sine theta, cos theta, LCM. Denominator we are having cos, so the sine will multiply to numerator. Sine multiplied by sine is sine square theta. Here no denominator is there, so let it be 1. So this whole term will multiply there. Sine theta, cos theta. Here sine is there, so cos will get multiplied. Cos multiplied by cos is cos square theta. We took sine theta, cos theta as LCM. Cos was there, so sine got multiplied. Sine square theta, only 1 is there, so both the terms will come. Sine is there, so cos will multiply and it will change as cos square theta. Now we know the identity, sine square plus cos square is 1. We will replace them with 1. 1 plus sine theta, cos theta. Just now I told that whenever in the denominator a single term will be there without any signs, we need to go for separation, separate division. So we'll write them separately under both the parts. So this sine theta, cos theta, both the terms are like terms, they will get cancelled completely. 1 upon sine is cosec. So we can replace 1 upon sine with cosec, 1 upon cos with sec, and here 1 is there, plus 1. So here this only we need to prove. So this we got our RHS. So the same question they can ask in different parts. They can make you to leave over here or up to here. So this we completed. This is one of the important question which to be practiced very properly. Now moving to the next question. So where this can be asked as even MCQ also. Second question is, it's fourth question. It's 1 plus sec A upon sec A. We need to make it equal to sine square A upon 1 minus cos A. So while I was explaining the important tips, I told like whenever there will be single term, we need to go for separate division. So it will be 1 upon sec A plus sec A upon sec A. 1 upon sec, it's cos. Sec will get cancelled, thus it is 1. This we got our LHS. Now let's move out with RHS part. RHS, for sine square, we can replace it as 1 minus cos square. How we got sine as 1 minus cos? Sine square A plus cos square A is 1. So sine square A will be shifting cos that side, 1 minus cos square A. So sine square A we replaced with 1 minus cos square A. In denominator, 1 minus cos A was already there. Now if we look onto the term, it's A square minus B square. So we can replace it as A plus B, A minus B. Repeat denominator as it is, 1 minus cos A. Now 1 minus cos A, 1 minus cos A will get cancelled. So we are having RHS as 1 plus cos A.
we can see that LHS was also cos A plus 1 and RHS also we got 1 plus cos A. So both are equal. Therefore, LHS is equal to RHS. Now coming to the next question. Question number 5. Question number 5, it's cos A minus sin A plus 1, cos A plus sin A minus 1. So this is the same question like we did the first one. Whenever in the denominator, like a big term will be there, okay, combined term. If you recall back your question number 1, it was like 1 minus cos A, 1 plus cos A. So whenever the term will be like two terms, for single term I told we need to go for separate division. If two terms will be there, we go for rationalization. So here also the same way we will rationalize it. So how to rationalize? Wherever there is minus sign, that to be changed during rationalization. Okay, only single sign we will change. Don't make other changes, only one sign to be changed. And that previous question plus was there, so we changed it. So here we are going to change this minus sign. Cos A minus sin A plus 1, cos A plus sin A. So as we are rationalizing, we will change the sign and we'll take it as plus 1. Repeat the same denominator, cos A plus sin A minus 1. Whatever we added as numerator, the same we will repeat again in denominator. So this we made the rationalization. We took the opposite sign, we multiplied to both numerator and denominator. Now compare. The second step will be always making the formula of A plus B, A minus B. While comparison, we will see which term is having minus sign. So here sign is having minus sign. So remaining two we will consider like A and this to be B part. Cos A plus 1 to be A, so it is A square, and remaining sin A to be B part, so it is B square. A square minus B square. And the same way negative sign is there in front of 1, so we'll consider that to be B. So again it is cos A plus sin A whole square minus 1 whole square. Whole square identity to be applied now. A square 2AB plus B square minus sin square A. The same in denominator also. Cos square A 2 cos A sin A plus sin square A minus 1. Now for the case of 1 minus sin square, already we used the formula 1 minus sin square is cos square A. So keep the first cos square A as it is, 2 cos A, 1 minus sin square is replaced as cos square A. And the same way cos square A sin square A is 1. So these two we can replace with 1 plus 2 cos A sin A minus 1. Now plus 1 and minus 1 will get cancelled. Here cos square A, 2 times cos square A is there. So 2 cos square A plus 2 cos A divided by 2 cos A sin A. We can take 2 cos A common as both the terms are having cos A. So we'll be taking 2 cos A common. If we take 2 cos A common, here we will left out with 1 cos A. Here nothing is there. So plus 1. Denominator 2 cos A sin A. So we repeated the denominator as it is. Now 2 cos A will get cancelled. Now we got the final step. I told like whenever we have single term, we need to separate divisions. Like we'll keep the first term, again denominator, second term and denominator. So I'm doing the last step over here. So here we were having cos A divided by sin A. Second term was 1. So 1 divided by sin A.
Now cos upon sin is cot. Sin 1 upon sin is cosec. So this we completed. We need to prove the term is equal to cot A plus cosec A. So this is our RHS. So thus LHS and RHS are equal. Now let's move with the next question. Question number 6. We completed 5 questions. So now question number 6. In 6th question, it is given root over 1 plus sin A upon 1 minus sin A is equal to sec A plus 10A. For this kind of questions, already I told we need to rationalize. So we are starting out with LHS. While rationalizing, we will take denominator with opposite sign. So here 1 minus sin A is there. We are going to multiply 1 plus sin A. Already 1 plus sin A was there. Don't change numerator. Whatever the denominator is taken, that to be repeated. So it's 1 plus sin A. Now both the terms are same. So it's 1 plus sin A whole square. In denominator, A minus B, A plus B is there. So it's A square minus B square whole under root. Now 1 plus sin A square, and this one is A square minus B square, that is 1 minus sin square. 1 minus sin square is cos square. So we can replace 1 minus sin square with cos square A. Again they are in root. So this root and square will get cancelled. So finally we'll be having 1 plus sin A upon cos A. Again we got single denominator. So we'll have separate division. 1 upon cos A, sin A upon cos A. 1 upon cos, it's sec. Sin upon cos is 10. So this we completed with our RHS. So thus LHS is equal to RHS. Question number 7 now. 7th question is sin theta minus 2 sin cube theta upon 2 cosec cube theta minus, cos cube theta minus cos theta. So here we can take sin theta common. So we'll be taking sin theta. We will left out with 1 minus 2 sin square theta. And the same way cos theta to be taken common. If we take cos theta common, 2 cos square theta minus 1. Now here the 2 sin square thetas are there. In the same way 2 cos square theta. And moreover we know sin upon cos is 10. So replace this by 10 theta. 1 minus, we can write 2 sin square theta as sin square theta minus sin square theta. Minus minus plus, but minus sign to be taken. And the same way 2 cos square theta can be written as cos square theta plus cos square theta, as they are twice, so we separated them. Moreover, 1 minus sin square theta can be written as cos square theta. So here we'll be replacing 1 minus sin square theta as cos square theta. Copy down sin square theta as it is. Denominator cos square theta. 1 cos square theta minus 1 is minus sin square theta. So cos square theta minus 1 will be replaced by minus sin square theta. So how we got this to be minus sin square theta? Already you know this identity, sin square theta plus cos square theta is 1. If I'll shift 1 to left side and sin to that side. So here cos square theta minus 1 will be minus sin square theta. So thus we got cos square theta minus 1 as minus sin square theta.
So this will be replaced with minus sine square theta. Now both the terms are same, so they will get cancelled. Finally, we left out with tan theta. So this only we need to prove. So thus we made LHS equal to RHS. So this we completed 7 questions. So are they clear to you? So got all the questions properly? Now we are going to start out with question number 8. Here. So whenever you'll be solving questions of trigonometry, practice is very important. You need to practice it thoroughly. Unless you repeat them number of times. So while seeing the question, we feel it to be very simple. We are getting all. But unless we repeat it, we'll not be able to solve it. Question number 8 is sine A plus cosec A whole square, cos A plus sec A whole square. We need to make them equal to 7 plus tan square A plus cot square A. So this question is also very easy. Looking like very difficult. Simply we'll be writing whole square formula here. A square 2 AB B square. B part is cosec. So B square will be cosec square A. So this is cosec square A. Now coming to the cos part. Again A square 2 AB B square. Sine square and cos square, they will make 1. So as their identity, so there will be 1. So replace sine square and cos square with 1. Now coming to this part, sine and cosec both are reciprocal to each other. So 2 sine A, cosec can be changed as 1 upon sine A. Now cosec square A we can replace as 1 plus cot square A. Already we are having identity. Even this proof will give hint like what to be taken if you get confused. So cosec square can be replaced as 1 plus cot square A. And the same way this cosec we will write as 2 cosec will replace as 1 upon here cos is there, so cos will replace as 1 upon sec A. Already sec A is there. Now the last term sec square is there. Sec square is 1 plus tan square. So replace this sec square with 1 plus tan square theta or tan square A. Now the sign will get cancelled. In the same way sec got cancelled. Now count out the terms. 1 plus 2, 3, 4. Again 2 is there. So 4 plus 2. 2 plus 2, 4, 5, 6, 7. So total 7 and then cot square A plus tan square A. So this is what? RHS. So finally LHS is equal to RHS. So here we completed with the total 7 question. Now the next question, question number 9. It's given cosec A minus sine A, sine A, sorry, it's a sec A minus cos A. We need to prove that equal to 1 upon tan A plus cot A. So for this kind of questions, so whenever the terms will be like opposite terms, we need to reciprocal it. So this will be the simple logic. Cosec we can replace as 1 upon sec A. Sorry, cosec is 1 upon sine. So this will provide term. Whenever you get confused, that will be providing hint to you, sine A. And the same way sec is 1 upon cos.
Now we'll have LCM. So 8th question you want me to explain again. 8th question. See here. Question number 8. Sin A plus cosec A होल स्क्वायर है, तो हमने सिर्फ फॉर्मूला लिखा होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। वैसे ही कॉस प्लस सेक है, फिर से हमने होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दिया, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। अभी यहाँ से जो हमारा सेकेंड टर्म शुरू हो रहा है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है आइडेंटिटी, उन दोनों को रिप्लेस करके 1 लिखा। अब यहाँ से साइन और कोसेक दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो दोनों कैंसिल हो गए, सिर्फ 2 बच गया। वैसे ही कॉस और सेक रेसिप्रोकल होते हैं, ये दोनों भी कैंसिल हो गए, सिर्फ 2 बच गया। इसको रिप्लेस करके, कोसेक को रिप्लेस करके हमने लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, आइडेंटिटी अप्लाई किया। इन द सेम वे सेक स्क्वायर को रिप्लेस करके फिर से आइडेंटिटी लिख लिया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसमें बस हमारा होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ हुआ है और 2 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि तीनों ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज यूज़ हुए हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 यूज़ हुआ है, कॉसेक स्क्वायर रिप्लेस होके 1 प्लस कॉट स्क्वायर हुआ है, सेक स्क्वायर रिप्लेस होके 1 प्लस टेन स्क्वायर हुआ है। तीनों आइडेंटिटीज एक साथ आए। फिर उसके बाद सारे जो कैंसिलेशन होने के बाद हमने वैल्यूज़ को ऐड कर लिया, 1 + 2 3 4 5 6 7। बाकी बच गया हमारा यहाँ पे कॉट ए टेन स्क्वायर है, दोनों को लिख दिया। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये 9th क्वेश्चन हमारा है, कॉसेक ए माइनस साइन ए 1 + 1 साइन। कोसेक को रिप्लेस करके हमने 1 साइन किया, साइन ए रखा। ओके, 1 मिनट। हाँ, सो वेट फॉर फ्यू मिनट्स, सो लेट्स कंटिन्यू। Now in the next question, it's cosec A and sin A is there. Cosec we can replace as 1 sin. So हमारा फिर से अभी LCM हो जाएगा sin A. So taking sin A as LCM, तो ये 1 minus sin multiplied by sin. Here nothing is there in the denominator, so we'll get multiplied with sin. So ये हो गया sin square A. And the same way cos A. So here cos will get multiplied with cos, so it will be 1 minus cos square A. इसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारा होता है आइडेंटिटीज़ को अप्लाई करना। 1 माइनस साइन स्क्वायर मने हो गया कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस मने साइन स्क्वायर ए। अब डिनोमिनेटर में है साइन ए कॉस ए, कैंसिल देम, कॉस कॉस गॉट कैंसिल, साइन एंड साइन गॉट कैंसिल, तो हमारे पास बच गया कॉस ए साइन ए। लेट दिस बी LHS। अब RHS को सॉल्व करना है। RHS was given 1/10A plus cot A। Now write down their formulas। 1/10 मने हो गया साइन बाय कॉस, कॉट मने हो गया कॉस बाय साइन। अब इनका एलसीएम कर लिए, ऊपर 1 है तो 1 को एज इट इज, एलसीएम इज साइन एंड कॉस। सो ये साइन यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, सो इट्स साइन स्क्वायर ए, कॉस इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विथ कॉस, सो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए। नाउ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1 आइडेंटिटी, और ये टर्म डिवीजन में है, सो इट विल गेट रेसिप्रोकल। सो फाइनल हमारा ये चीज़ ऊपर चला जाएगा, सो इट्स कॉस ए साइन ए, एंड दिस विल चेंज एज 1। So this we got RHS. One more, whenever
like during exams, wherever the identities we are using, we need to write it in the side. Like these identities, they are making 1. Now this question got completed. Now we are on the last question of the session. So this is the last question, where question number 10, 1 plus tan square a upon 1 plus cot square a. We need to make it equal to 1 minus tan a upon 1 plus 1 minus cot a equal to tan square a. So let's start out with first term. 1 plus tan square a. Use the identity. Sec square minus tan square is 1. So 1 plus tan square will be sec square. So first term I am solving. So directly I replace this with sec square. The same way 1 plus cot square is cosec square a. Now use their formulas. Sec is reciprocal of cos. So it will be 1 upon cos square a. Cosec is reciprocal of sin. So ये हो गया 1 upon sin square a. अब ये दोनों टर्म डिवीजन में है, सो दे गेट रेसिप्रोकल. साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर नीचे. सो हियर साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए. साइन अपॉन कॉस इज 10, so it will get replaced with tan square a. So this we got first term to be tan square a. Now starting out with the second one. अब यहाँ पे हमको दोनों को रिप्लेस करना होगा with their formulas. 1 minus tan is sin upon cos. Cot is cos upon sin. Now getting LCM, cos multiply हुआ. So this whole term is in square. तो अब ये cos इधर LCM हो गया, माइनस sin a बाई cos a, फिर sin LCM हो गया, sin a माइनस cos a बाई sin a होल स्क्वायर. अब यहाँ पे टर्म्स का साइन डिफरेंट है, वी कैन टेक माइनस कॉमन. अगर फर्स्ट टर्म में से हमने -1 कॉमन ले लिया तो ये हमारा हो जाएगा sin a माइनस cos a अपॉन cos a. अगेन इन द डिनोमिनेटर sin a माइनस cos a upon sin a whole square. So finally sin a cos a will get cancel, और ये जो डिनोमिनेटर्स है ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे. साइन ऊपर चला जाएगा, कॉस नीचे आ जाएगा. -1 स्क्वायर इज +1, so it's sin a upon cos a whole square. Sin upon cos is 10, so it's minus tan a square. So when we make square of any term, it will be plus. So we got answer as tan square a. So this we made all the 3 terms to be equal. Okay. So all are equal to tan square a. So this we completed. Most probably I think that everyone understood. So thank you for attending the class and listening it carefully. Unless you repeat it, you are not going to get. So repeat it twice or thrice to get the exercise thoroughly. Okay, now I'll be winding up class. Thank you for watching and attending.